Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11 and today I am going to discuss the structure of proteins. So let's move to the whiteboard. So dear students, structure of protein. Very important topic regarding board examinations as well as anti-test point of view. इसमें शॉर्ट MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन हर लिहाज से बहुत ही अहम और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है. तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स या इसका दूसरा नाम हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दैट इज द levels of organization of proteins. क्लियर? तो ये आपको दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है. इसका कतई मतलब नहीं है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. तो 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें के प्रोटीन्स होती हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं. 4 स्ट्रक्चर्स. क्लियर? जिसमें से लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है द प्राइमरी स्ट्रक्चर उसको स्टार्ट किया था और उसको काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट भी कर लिया था. तो जो उसकी जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो आज भी कवर करेंगे और आगे मूव करेंगे. सो वी हैव स्टडीड the first structure, that is primary structure. So dear students, primary structure इसमें हमने बात की. इसमें 2 चीज़ें अहम हैं. 2 things are most important in the primary structure. It involves the number of amino acids number 1, and number 2, it involves the sequence of amino acids. Clear? और dear students, जो primary structure है, it is also known as the plain structure. It is the plain structure. How it is known as plain structure? Just एक प्रोटीन बनाने के लिए जितने अमाइनो एसिड चाहिए उनकी तादाद पूरी की जाएगी, मीन्स उनका नंबर पूरा किया जाएगा. एंड नंबर 2, उनको सीक्वेंस में अरेंज किया जाएगा जो भी प्रोटीन है. क्लियर? हर प्रोटीन जो है, हमने बात की थी कि जो प्रोटीन्स होती हैं दे कंसिस्ट ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स टू अप टू 3000 अमाइनो एसिड्स. तो टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं उनमें ज़्यादातर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 20. क्लियर? और जिसमें हमने बात की थी 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल. तो वही अमाइनो एसिड्स बेसिकली वो मिलकर और नंबर ऑफ प्रोटीन्स बना रहे होते हैं. थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन हमने बात की थी कि देयर वाज साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ F. Sanger. He worked for 10 years. 10 साल तक काम किया on insulin. That is a hormone. Clear? And he came to know, finally, he came to know his hard work that insulin, it consists of 2 chains. The first chain consists of 21 amino acids, and the second chain consists of
30 amino acids. So total makeup of 51 amino acids. Clear? तो इंसुलिन के अंदर टोटल 51 अमीनो एसिड्स हैं और ये दो चेन्स की शक्ल में मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट में हमने पढ़ा इसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के वाले से बात करें और प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के वाले से कि दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं, दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हमने कहा था, द कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। तो वो तो रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ और बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उनको स्टेबलाइज करने के लिए। क्लियर? इसी तरह से हमने बात की थी हीमोग्लोबिन की। So hemoglobin, it's an iron containing protein. It consists of total 574 amino acids. Clear? All these students, it consists of 4 chains. Alpha, 2 alpha chains, and 2 beta chains. Clear? Each alpha chain consists of 141 amino acids, 141 amino acids, while each beta chain consists of 146 amino acids. 146 amino acids. Clear? So the total makes up 574 in just a single hemoglobin. Clear? तो dear students, यहाँ पर एक और चीज़, चूंकि ये भी एक चेन है, यानी कि जब भी दो या दो से ज़्यादा जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो हम उस चेन को हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड देन इट बिकम्स द पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? यहाँ पर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। क्लियर? अब जब डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमीनो एसिड्स हैं, दिस इज एन अमीनो एसिड and this is another amino acid. They are linked with each other by peptide linkage, that is peptide linkage or peptide bond. So here is a chain of amino acids. Let's suppose these are the 2 chains, polypeptide chains. And these small circles, they are representing the amino acids. And this line is representing the peptide linkage or peptide bond between them. Clear? So here is so these are linked with peptide bonds. This is polypeptide chain 1 and this is polypeptide chain 2. Clear? ये दोनों। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देयर इज अनदर बॉन्ड। जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, तो अब उन चेन्स को जोड़ने के लिए, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर उन चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए देयर इज अनदर बॉन्ड, एंड दैट वेरी बॉन्ड इज द डाइसल्फाइड लिंकेज। और डाइसल्फाइड लिंकेज कहाँ पर होगा? जब भी कोई sulfur containing amino acids, dear students, the sulfur containing amino acids, let me
यू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि ये दोनों अमीनो एसिड्स आमने सामने हैं, एंड लेट्स सपोज दे आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. सो व्हेनेवर दे कम अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएंगे, तो यहां पर ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे विद द डाइसल्फाइड लिंकेज. इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूं. लेट्स सपोज दिस इज an amino acid, sulfur containing amino acid, and this is another sulfur containing amino acid, or and this one is having sulfur group, and this one is also having sulfur group, and these sulfur are connected with each other. So this is how it becomes a disulfide, means containing two sulfur. So this is disulfide linkage. Clear? So that is the type of the bond present between the polypeptide chains. तो यहां पर bond के लिए स्पेशली मैं लिख रहा हूं in primary structure the accessory bond is that is disulfide linkage present or formed between two sulfur containing amino acids present in front of each other in the adjacent polypeptide chains. Clear? तो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. तो ये चेन्स आपस में कैसे जुड़ी हैं? दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज. दैट इज एन इंपॉर्टेंट MCQ. Disulfide linkage. So this one is the disulfide linkage. Clear? Up dear students, the size of protein depends upon कि प्रोटीन छोटे साइज की है, बड़े साइज की है, लो मॉलिक्यूलर वेट है या हाई मॉलिक्यूलर वेट है. So it depends upon two things. It depends upon, number one, the type of amino acids, and number two, the number of amino acids. तो जितने बड़े और जितने ज़्यादा नंबर होगा अमीनो एसिड का, उतनी ही बड़ी हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होगी. So that is a short question as well, that on what factors or on what things the size of a protein matters or depends. Clear? So the answer is this. अच्छा dear students, यहाँ पर एक और चीज़, the sequence or the size in a primary structure, क्योंकि सबसे पहले बनना ही किसी भी प्रोटीन ने गुजरना, सबसे पहला स्ट्रक्चर ही उसका प्राइमरी बनना है. The sequence in a primary structure is so important that if only a single amino acid is not at its position, the protein formed will be unable to carry its normal function. Means कि ये जो तरतीब है किसी भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स की, वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है
कि जस्ट अगर एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह पर अटैच ना हो तो जो प्रोटीन है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी. वी हैव रेड दैट इन ह्यूमंस there are over 10,000 different proteins made from a particular sequence of only 20 amino acids. सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स की मदद से 10,000 से भी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि इंसानों के अंदर बनती हैं, मौजूद हैं. तो ये किसी के भी हाफ के ऊपर होगा, उनका पर्टिकुलर सीक्वेंस की वजह से. और अगर उसके सीक्वेंस में कोई भी इश्यू आ गया, एक भी अमाइनो एसिड का इश्यू आ गया डियर स्टूडेंट्स, सो द प्रोटीन फाउंड विल बी अनएबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन. तो इसकी एग्जाम्पल यहां पर एक कोट की गई है टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. To understand the importance of sequence of amino acids in a protein is studied through an example of hemoglobin. So we have read that hemoglobin, it is made up of 574 amino acids. So dear students, in hemoglobin, in each beta chain at position number 6, there is glutamic acid. There is glutamic acid. That is basically an amino acid. So dear students, the glutamic acid, if the glutamic acid is replaced by valine, another amino acid, at position number 6, at 6th position, this leads to a disease called sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Clear? Dear students, आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जो हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, इट इज ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर. आगे चल के हम डिटेल से स्टडी भी करने वाले हैं. और इसी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से आरबीसीज दे आर ग्लोबुलर. सो लाइक दिस. ठीक है, ये सामने से आपको व्यू दिखा रहा हूँ. सो दरमियान में से पिचकी हुई, साइडों से ऊपरी हुई, जस्ट लाइक अ बटर स्कॉच आपने देखा है. ठीक है, इट इज स्फेरिकल. रेड ब्लड सेल, ये सामने से अगर हम इसको ऊपर से देखें तो इट इज जस्ट लाइक दिस. This is a normal red blood cell. Clear? लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ
टोटल कितने हैं अमाइनो एसिड्स इनके अंदर 574। उसमें से जो बीटा चेन है उसमें पोजीशन नंबर 6 के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, दैट इज अनदर अमाइनो एसिड। तो उसकी वजह सिर्फ 574 अमाइनो एसिड में सिर्फ एक, जस्ट वन अमाइनो एसिड अपनी जगह पर नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, द हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड इज नॉट नॉर्मल, इट बिकम्स सिकल शेप्ड। सिकल कहते हैं जैसे दरांती की तरह का होगा, लाइक दिस। So this is what we call a sickle shaped. This is sickle red blood cell. तो जब एक प्रोटीन अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में ही नहीं है, this RBC, that means the sickle cell is unable to carry the gases, means the oxygen and carbon dioxide, ultimately leading to death. Ultimately leading to death of the patient. Clear? और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को टोटल फाइनलाइज कर देते हैं। So this is how, what happens in the primary structure. These boxes are representing the amino acids. And they are joined with each other by peptide linkages. On and on. And this is amino acid 1, this is amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5, amino acid 6, on and on. जितनी लंबी चेन होगी तो डिपेंड करेगा कि वो प्रोटीन कौन सी है। तो जस्ट एक सीक्वेंस बना, एक प्लेन सीक्वेंस, एक बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर बना। सो दैट इज व्हाई प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इसमें ये बिल्कुल प्लेन, जस्ट अमाइनो एसिड्स, उनकी तादाद और जिस अमाइनो एसिड की जो पोजीशन थी अपने प्रोटीन के अंदर, उसमें सिर्फ तरतीब लगी है। इस तरतीब लगने को, इस सीक्वेंस बनने को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर, जस्ट अ प्लेन स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन है। दे विल लाइन अप, दे विल लाइन अप। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं कल और डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।